class, we'll start with brief introduction of HRM. Okay, because you have not studied HRM, so I think that it will be relevant that before you get introduced to payroll management on the whole, right, you should get a little aware of what is HRM and what are all the facilities. So what are all the activities that HRM carries on in an organization, right? Can you name activities that HRM resource department in an organization carries out? Can you name few activities? ऑर्गेनाइजेशन का एचआर डिपार्टमेंट क्या क्या करता है? मैम आवाज फ्रेश नहीं आ रहा है। आवाज मैम आपके माइक में प्रॉब्लम है, ईयरफोन वाला में लगता है आवाज खर 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 करके आता है। नहीं, बाकी सारा क्लासेस तो हम इसी करेंगे। So to name a few, can you tell me few of the human resource activities that the department carries on in an organization? Recruitment, right? Human resource department of any organization carries on the recruitment. Procurement of manpower is the work of human resource department, right? Training and development, HR department करता है। Manpower का development, ट्रेनिंग के साथ साथ एग्जीक्यूटिव्स का डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉइज सेफ्टी, एम्प्लॉइज वेलफेयर, मेंटेनेंस ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, ओके, एंड सेपरेशन प्रोसेस. All of this is carried out by the human resource department of any organization, right? What is separation process? सेपरेशन का लिटरल मीनिंग क्या होता है? सेपरेशन का लिटरल मीनिंग होता है अलग होना, right? And this is what we mean when we speak about it in context of HRM, that when an employee gets separated from the organization due to whichever reasons, this is known as separation process. Okay? क्या क्या सेपरेशन प्रोसेस हो सकता है? किन किन रीजन से एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो सकता है? Retirement. Retirement is the most common separation, right? Resignation. You're understanding my point that these are all the separation activities that HR department of an organization carries on. The separation process, which is probably the last process that an employee goes through in an organization, is the separation process. So what are all the methods by which carried out in an organization? Retirement, retrenchment, layoff, dismissal, discharge, resignation, voluntary retirement. Okay. Now, we'll start with a brief introduction of what is payroll and what is payroll management in an organization. Okay. Can anybody tell me what is payroll management? Any idea about what is payroll? Not talking about its management, just talking about payroll. See, payroll is the process of giving salaries to the employees. Employees are associated with the organization, right? And these employees, they take salaries from the organization, right? So there must be a process of giving them the salaries, because salary is not just an amount of money, it is a whole form of compensation. There are so many things which we have to study when we talk about the salary of an individual. And why payroll management becomes very important is because there are different grades of employees in an organization. एक एम्प्लॉय में अलग अलग लेवल पे लोग काम करते हैं, उनकी सैलरी अलग अलग होती है, उनका पर्क्स अलग अलग होगा, उनका अलाउंस अलग अलग होगा, वो
जो बेनिफिट्स अपने ऑर्गेनाइजेशन से उठाते हैं वो बेनिफिट्स अलग अलग होगा. Getting my point? See, why payroll management is very important, because salary is given to every employee whether he or she is working in, irrespective of the department in which the employee is working, right? अगर कोई एम्प्लॉय प्रोडक्शन में भी काम करता है, कोई एम्प्लॉय एचआर डिपार्टमेंट में भी काम करता है, whether that person works in marketing or warehouse or quality control or quality assurance, regardless of the department in which that employee works, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 50,000 एम्प्लॉय है तो सबकी सैलरी कैलकुलेट होगी ना? यस मैम. सबकी सैलरी कैलकुलेट होगी, और ये सबकी सैलरी ही नहीं सिर्फ कैलकुलेट होती है, पेरोल में सबकी सैलरी, सबका बेनिफिट, सबका अलाउंस, प्लस देयर आर वेरियस अदर एक्टिविटीज व्हिच आर आल्सो पार्ट ऑफ पेरोल मैनेजमेंट. जैसे एम्प्लॉयज ने कितना लीव लिया, एम्प्लॉयज कितना लीव विदाउट पे पे है, सैलरीड एम्प्लॉय है या डेली बेसिस एम्प्लॉय, उस हिसाब से इसको जो सैलरी मिलेगी, इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी डिफरेंट, राइट? एंड टू मैनेज सैलरी of such huge number of employees in the organization becomes a very cumbersome task. Okay, becomes a very cumbersome task. That is why payroll management becomes very important. क्योंकि अगर एम्प्लॉय की सैलरी अच्छे से कैलकुलेट होगी, उनका सारा सिस्टम, उनका सारा टैक्सेशन, उनका सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, उनका लीव रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग it gets calculated in a fair way, then obviously the employees are also going to be happy and satisfied. Or is it possible to manually calculate the entire salary structure of the entire organization? Is it possible है manually calculate करना? No, this is not possible manually. Okay, and अभी के time पे payroll management is not just about the salary structure, it is also about various other HR activities which there are good softwares. ऐसी softwares आती है payroll management की जो salary के साथ साथ आपका other performance activities भी calculate करती हैं, other HR activities like performance appraisal. You know about performance appraisal? Anyone? What is performance appraisal? What is performance appraisal? See, performance appraisal is a systematic evaluation of the performance of an employee. Okay, performance appraisal आपने ये सुना होगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका परफॉर्मेंस असेस होता है और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आपकी सैलरी बढ़ाती है या फिर ये डिसाइड करती है कि whether you are fit to work as a permanent employee or regular employee or you still need some training. अगर आप fit नहीं हैं, if the employer feels that even after the provision period you are not fit, then it might send you for training, right? ये सारी चीजें हम परफॉर्मेंस अप्रेजल में समझते हैं. परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद होता है एंड दिस वुड वेरी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. किसी के लिए 6 महीना होता है, किसी के लिए 1 साल होता है, किसी के लिए प्रोजेक्ट वाइज होता है. ठीक है, तो payroll management basically it is a process of giving salaries to the employees working in the organization. समझ में आई बात? अब सैलरी दी जाती है. डू यू नो अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी? आपको आइडिया है सैलरी में क्या क्या आता है? Anyone? What's there in salary?
अलाउंस के बारे में सुना है? बेनिफिट्स के बारे में सुना है? See, Yes, ma'am. these are all the components of salary. You need to write down क्योंकि payroll management में सैलरी को ही स्ट्रक्चर किया जाता है, सैलरी का ही कैलकुलेशन होता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पेरोल मैनेजमेंट क्या है और पेरोल मैनेजमेंट में जो सैलरी आती है सैलरी का कंपोनेंट्स क्या है. सो इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन फ्यू लाइंस so that you can revise it later. Write down. Payroll management is the process of giving salaries to a company's employee. Process of Giving salaries गिवन सैलरी के बाद में to the company's employees. To the company's employees. टू द कंपनी एम्प्लॉइज It starts with स्टार्ट विद It starts Start. with स्टार्ट्स विद making a list of employees एम्प्लॉइज ये माइक बंद करो ना. repeat, ma'am. It starts with making a list of employees and ends with, I'll repeat it, don't worry, and ends with recording their expenses. And ends with recording their expenses. Okay, I'll repeat it. Payroll management is the process of paying salary to the company's employees. It starts with making a list of employees and ends with recording their expenses. अब ये बताइए कि सैलरी कैलकुलेट होती है तो सैलरीड एम्प्लॉइज टैक्स भी देते हैं. यस मैम. यस मैम और अलग अलग सैलरी के लोग अलग अलग टैक्स स्लैब में आते हैं. यस मैम. Yes, ma'am. So the salary which is given to them will also be according to how much taxes they are paying. So payroll management also has financial records of an employee. हर एम्प्लॉय का फाइनेंशियल रिकॉर्ड उसको कितना टैक्स पे करना है ये वो मेंटेन करता है पेरोल मैनेजमेंट. इसलिए पेरोल मैनेजमेंट करने के लिए the department should have knowledge of cost and accountancy. ठीक है, कॉस्ट और अकाउंटेंसी का नॉलेज होना चाहिए पेरोल मैनेजमेंट के लिए. इसीलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में पेरोल मैनेजमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट भी देखती है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में. लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दिस इज एन HRM वर्क. ये ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है. इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ टैक्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या टैक्सेशन या फाइनेंशियल बातों के अलावा भी बहुत सारी HR एक्टिविटीज को इसके साथ लिंक किया जाता है और वो HR एक्टिविटीज लिंक होने की वजह से पेरोल का डिपार्टमेंट और HR का डिपार्टमेंट it almost works in synchronization to give efficient output to the employees and for the organization on the whole. ठीक है, HR एक्टिविटीज में क्या क्या करती है पेरोल मैनेजमेंट. इंक्रीमेंट करता है. इंक्रीमेंट जो पेरोल मैनेजमेंट इंक्रीमेंट नहीं करता है लेकिन HR डिपार्टमेंट जो इंक्रीमेंट करता है उसको वो नोटिफाई करता है. नोटिफाई करेगा तब
तो अगले मंथ की सैलरी बढ़ा करके बनाएगा, राइट? नाउ राइट डाउन व्हाट ऑल पेरोल मैनेजमेंट डज। पे देखिए, right, many payroll activities are related to HR issues. So they must coordinate. मैम इश्यूज के बाद So they must coordinate, मतलब पेरोल डिपार्टमेंट और HR को कोऑर्डिनेट करके काम करना चाहिए. So they must coordinate due to their shared functions. Due to their shared functions. Many payroll activities are related to HR issues, so they must coordinate due to their shared functions. अब points लिखो कि कौन-कौन सी activities common होती है. Point 1 लिखो, recruitment. Recruitment. क्या मैम? Recruit करना. आवाज नहीं आ रही मैम. मैम रिक्रूटमेंट Recruitment. Recruitment करना, hire करना. Recruitment. Second point, salary increase. Third point, bonus payment. Fourth, deductions. फोर्थ क्या मैम? Deductions. जो पैसा काटा जाता है. Deductions. Vacation leaves. मैम रिपीट Vacation leaves. का leave. Vacation leaves. And last, firing employees. फायरिंग एम्प्लॉय मैम. Firing employees या separation. और करके लिखना, firing employees or separation. मैम फिफ्थ क्या बोले? Correct. जो the one who is asking, except him, please switch off your mics. It creates a lot of background noise. Firing employees. Firing, F-I-R-I-N-G. Firing employees or separation. वो हो गया मैम, उससे पहले वाला. Vacation leaves. Vacation leaves. मैम एप्लीकेशन नीड्स है क्या? Vacation, Application. vacation. No, it's vacation. वेकेशन हाँ, vacation. छुट्टी. ओके मैम. Taking the screenshot of attendance. For an organization, can you tell me, for an organization, एक एम्प्लॉय को जो सैलरी प्रोसेस होती है उसका बहुत सारा कंपोनेंट्स प्रोसेस होता है ना. There are so many components of a salary which is processed. An employee may fall in one or the other brackets of salary. So that bracket of that employee plus the allowances, benefits,
all the employee stock option plans. ये सब आपका पहला क्लास है, इसलिए I am not telling you the details. Gradually we will deal with 1 or 2 lines of details of everything that you have to study in payroll management. Okay. Employee stock option plans है, उनका deductions है. Deduction कैसे कैसे होता है, जो पैसा कटता है, जैसे PF सुना होगा, Provident Fund, ESI. And there are benefits like gratuity benefits. There are some statutory benefits, मतलब which is compulsory by government. Government ने बोला है कि वो देना है, हर organization को देना है. Plus there are some non-statutory benefits, which means these are good to have benefits by the organization. They are also called fringe benefits by the organization. Fringe benefits means those benefits which you get for just being attached to that organization. Okay, these benefits are the actual reasons why the company, these are the reasons why company wants to retain its employees in the organization. Benefits are a very good way to retain its employees in the मैम आपकी आवाज organization. क्लियर नहीं है. Is it okay now? Is it okay now? मैम आ रही है लेकिन बहुत धीरे आ रही है. और मैम बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है आपकी. कट कट के आ रही है आवाज में. Connected it on LAN or no? मेरी ईयरफोन प्रॉब्लम है, बहुत आवाज आ रही है मैम. So what I was telling, that to process salary of so many people in an organization, they are working in different departments like HR department, production department, warehouse department, quality control department, quality assurance department. It is not an easy task. Okay, you think it is easy task to calculate all the salary details of 50,000 employees? किसका कितना salary structure है और कौन किस salary bracket में fall करता है, किसका कितना tax deductions है, किसको stock shares मिला है, and various other things. It's not possible to do it manually. Okay, इसीलिए payroll use किया जाता है, which simplifies the process. It makes it easy to work on. And various HR activities are linked with it in order to make the work more efficient. Now you tell me, if payroll management is done manually, क्या होगा? अगर इसमें manual लोगों को लगाया जाएगा तो क्या होगा? Tell me. What will happen? Tell me. ज्यादा खर्च आएगा मैम, ज्यादा आदमी रहेगा, उसको ज्यादा Yes. सैलरी देना पड़ेगा. हाँ. गलती भी होने का चांस ज्यादा हो सकता है अगर Very good. कोऑर्डिनेशन नहीं रहा सबके पास तो. Very good. और redundancy का chances है. Yes, it happens. Cost एक बहुत बड़ा factor हो जाएगा. Time एक बहुत बड़ा factor हो जाएगा. बहुत time लगेगा, right? उसको करने में, manual काम करने में बहुत time लगेगा. Technology क्या करती है? Time consuming पे work करती है. It reduces time, right? Inaccuracy हो सकती है. There could be a lot of inaccuracy. और अगर inaccuracy हुई तो sometimes it might go unnoticed and sometimes it might lead to reworking of the same thing. उसी काम को फिर से करना पड़ेगा, right? और अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्शन ज्यादा होता है या वो जो एक्सपेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी स्लिप नहीं बनती है, does it not cause unsatisfaction, dissatisfaction in those employees? होगा ना? अगर सैलरी स्लिप गलत बन करके आएगी तो ये एक dissatisfaction will cause dissatisfaction in the employees. Yes ma'am. Okay, so write down advantages of payroll management. क्या लिखा मैम? Advantages of payroll management.
cost cutting, employee satisfaction, 3, accuracy, 4, avoiding rework, फिर से काम करना को अवॉइड करता है वो, avoiding rework, that's all. देखिए एक्यूरेसी के बाद क्या बोलेंगे? इसके बाद एक्यूरेसी के बाद accuracy, avoiding rework, फिर से काम करने से बचाता है, it prevents you from getting into doing the same thing over and again, avoiding rework. ठीक है, now write down मैम Function- फर्स्ट क्या था? फर्स्ट first cost cutting. ठीक है, तो ये तो हुआ पेरोल मैनेजमेंट का एडवांटेज कि मैनुअल काम करने से अगर हम पेरोल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सैलरी को कैलकुलेट करने में तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या एडवांटेज मिलता है. अब लिखो एडवांटेजेस ऑफ पेरोल. फंक्शंस ऑफ पेरोल, राइट डाउन फंक्शंस ऑफ पेरोल. Payroll management carries out all functions by which an employee receives his salary. By which an employee receives his salary. For example, write down salary structuring. क्या मैम? Salary structuring, सैलरी को स्ट्रक्चर करना. Record keeping, record keeping, wage deductions, wage deductions, verifying the reliability of pay data, verifying the reliability of pay data, delivering payroll checks, delivering payroll checks, maintaining compliance with tax laws, maintaining compliance with tax laws, recording paperwork, next step, recording paperwork for new hires, पेपर for new hires means जो लोग नए हायरिंग होते हैं उनके पेपर वर्क को भी पेरोल मैनेजमेंट काम करती है ताकि उनका सैलरी जनरेट कर सके. रिकॉर्डिंग पेपर वर्क फॉर न्यू हायर्स,
employee record, or write down editing existing employee files, Employee file, ma'am. and calculating reimbursements, Calculating. reimbursement, bonus, overtime, Overtime. holiday pay, and holiday pay. Write down. ओवरटाइम के And holiday pay. And holiday pay. Okay. So these are all the functions of payroll management of an organization. इसमें जितना फंक्शंस आपको लिखा गया है सबको ब्रीफिंग करनी है थोड़ी थोड़ी, जैसे आपने फ्रेश हायरिंग लिखी है वहां पर रिक्रूटमेंट आपको पढ़ाएंगे हम। जितना डिडक्शंस है, डिडक्शंस में पीएफ है, डिडक्शंस में ग्रेच्युटी है, ईएसआई है, ये सब बताएंगे हम। तो आप ये समझिए कि ये एचआरएम का पार्ट होता है, ये स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस है, लेबर लॉज का पार्ट है, स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस है जिसको कि हर एम्प्लॉयर को मानना है, इसीलिए स्टैंडर्ड रिडक्शंस में आता है। ठीक है, प्लस यू डू नॉट हैव एक्सपोजर ऑफ सैलरी राइट नाउ। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अबाउट सैलरी, कि सैलरी का क्या क्या कॉम्पोनेंट होता है। ओके ओके Yes, यस ma'am. मैम।